Hello, good morning, students. Today we will go through a brief recap and a small revision of chapter which is called as Heat, chapter number 5 in Science 1. And we are not going to discuss the entire chapter, but we are just going to pay attention to some of the headlines, some of the main discussions, chances of which are there for coming in the exam. हम लोग उस पे फोकस करेंगे. Now, in the beginning of this chapter, we had discussed, if you remember, that we had discussed about the way heat is transferred in solids, in liquids, and in gases. If you can recollect, we had discussed that in solids, the mode, the method of transfer of heat is conduction. In liquids, the method of heat transfer is convection. And, and among the gaseous things, it is convection as well as it is also radiation. The difference between convection and radiation is that in convection, particles ka shifting hota hai. There is particles involved from a higher temperature towards from a lower temperature towards a higher temperature. However, in radiation, no particles are involved. Like sun ka heat reaches to the earth, it travels thousands or rather millions of kilometers, and all the while it is in space जहाँ पे कोई particles है ही नहीं. So that was radiation. However, one of the question which has come often in the exam, even the Mahesh tutorials people in their prelim exam may ask you this question, is distinguish between heat and temperature. Now, normally people assume दोनों एक ही बात होती है, but honestly they are little different from each other. When you talk about heat, it is the quantity or the measure of the total amount of energy which is present in an object. Attention to this point. It is the amount of heat energy present in an object. It focuses on quantity. Heat matlab quantity की बात कर. On the other hand, when you talk about temperature, it is a measure of the degree of hotness or coldness of an object. Now, when you say degree ke liye, you can also say it stands, another word for degree would be level. Degree would be level. So it is the level. It is the level of hotness or coldness of an object. Now, let's say this is an example to understand this point. Let's say there is a classroom, and in that classroom, they can sit, suppose example, I'm saying 50 students ka classroom. So 50 students ke classroom mein, let's say on that day, 25 students were present. So if 25 students are present in that classroom, what is the level, capacity level of that classroom of attendance? We will say it is 50%. I'm sure you will agree. हम लोग agree करेंगे कि अगर 50 students की classroom है and 25 students have come, so we will say it is 50%. So 25 out of 50 is considered to be 50%. I'm sure you will agree on this point, right? तो अगर 25 students present है और एक classroom में 50 students बैठ सकते हैं, so that is considered as 50%. Let's say there's another classroom, and in that another classroom which has a capacity, let's assume, of 60 students. In that also 30 students are present. So can we say 30 students present out of 50 student का capacity of a classroom, तो वो भी 50% है. So can we say the level of attendance in both the classrooms is equal? क्योंकि पहली क्लासरूम में भी 50% students are sitting, second classroom में भी 50% students are sitting. So when we say level of students in both the classroom, then we will say they are same. 50% इधर भी है, 50% उधर भी है. But if we look at the quantity of students, this is important. If we look at the quantity of students, then in quantity of students, you will realize that यहाँ पे 25 students बैठे हुए हैं and यहाँ पे 30 students बैठे हुए हैं.
So we understand that level wise both the classrooms are having same level of students, 50%, 50%. But quantity wise, the students are different. One is having 25 students, one is having 30 students. Same way, temperature tells us the level of heat. So let's say in Mumbai, because of the suppose winter season, the temperature is 15 degrees Celsius in the night. And let's say in some other city, let's say in Nagpur, in the night, it is 15%. So level wise, both are 15% only. मुंबई का रात का टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, नागपुर का रात का टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस. So level wise both of them are having same heat, but quantity wise the amount of heat will be different because maybe Nagpur has a bigger area, उधर जितना matter है जितना air है उसकी heat will be different from suppose Mumbai which is a smaller city compared to Nagpur. So remember, temperature focuses on level while heat focuses on quantity. This is something which you have to keep in mind कि जब भी आप temperature की बातें करोगे, so temperature focuses on level of heat. Degree of heat मतलब level of heat. Whether it is high level, low level, medium level, that way. And when you talk about heat, then remember we focus upon quantity. Correct. And major reason, the factor is heat is dependent on the mass of an object. Temperature is not dependent on the mass of the object. Okay. All right. So this is one thing which you have to keep in mind. Yeah. So this is the major difference between heat and temperature. Another thing would be the units. The units of heat is joules. As you are aware, it's a form of energy. Heat is after all a form of energy. So SI unit, remember this is something you keep in mind. Later on there is some confusion. SI unit of heat is joule. This is something you remember please. And temperature is measured in Kelvin in the world of physics. Of course, day-to-day life we do talk about centigrade and Fahrenheit. But in the world of physics, it is Kelvin. Thirdly, heat is always a positive value, while temperature can be positive or negative. Of course, in a place like Mumbai, we don't experience negative temperatures. Winter, kitni bhi strong, kitni bhi severe ho, our temperature is like 13 or 14 degrees. Never it has experienced below that. But if you go to Srinagar, if you go to the hill stations which are in the north, if you go to Kashmir, Shimla, then you can possibly have minus temperatures also. So this is a question which you can expect, distinguish between heat and temperature. Then another favorite question of the examiners is the discussions related to latent heat. I may have told you earlier, but remember one word, the word which can describe latent is something which is hidden, something which is not visible, something which is inside. Sometimes people get angry, but they don't express their anger. वो अंदर ही रखते अपने गुस्से को, अपने anger को. So we say it is a latent anger. So latent heat is the hidden heat. Now this hidden heat, as you are aware, is normally found when a substance is changing its state. And if you remember this experiment which we have done, it is regarding some ice cubes taken in a beaker and there is a thermometer which is inserted in it. Initial temperature that can be seen in the thermometer 0 degrees. And as we start heating the ice, it is seen that instantly ice does not melt. Never it happens that as soon as you start the gas and within 1 second सब ice melt हो गया. No, it doesn't happen. ये ice को melt होने को कुछ वक्त लगता है. Maybe 2 minutes or 3 minutes. An example I'm saying. So if it takes a couple of minutes, it takes 2 minutes or 3 minutes. And for that time, in that 2 to 3 minutes, it is seen कि burner से, gas burner से heat is being provided, लेकिन वो 2-3 minutes तक temperature is not rising.
If you look at the graph, you will see one red line has come. It starts from 0 and ends at 4. It means it is there for 4 minutes. For 4 minutes, temperature is not rising. And when the temperature is not rising, question is what is happening to that heat? नीचे से तो heat supply is going on, ऊपर melting नहीं हो रही, melting हो रही है, temperature नहीं बढ़ रहा है. Then we see that whatever heat has been supplied in this 4 minutes, the reason that temperature is not rising is because जितना यहाँ से हम लोग supply कर रहे हैं, सारी heat utilize हो रही है. और अगर heat utilize हो जाए तो temperature will not rise. For example, if you deposit 1,000 rupees in your bank account and immediately that 1,000 rupees is withdrawn for some work, then your bank balance will remain zero only. There will not be any change in your bank balance. For example, it was 0 rupees in the beginning. मैंने 10,000 rupees deposit किया और किसी ने वो 10,000 जिसको मैंने पहले से बता के रखा था, उसने वो 10,000 रुपीज इंस्टेंटली विड्रॉ कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस में उतना ही पैसा बचेगा जितना पहले था. मतलब the amount which has been deposited is not increasing my bank balance. Same way, this heat is being supplied to the ice cubes. Initially, it was the ice cubes. This heat is being supplied to these ice cubes. This heat is being utilized. जैसा यहाँ से supply start किया, वो सारी heat utilize हो जाती है ice को melt करने में. That is the reason temperature does not rise. So in your graph, that segment AB shows the process of melting. Pay attention, this is important. Segment AB shows the process of melting. What is happening in the process of melting? The ice was there, धीरे धीरे वो water में convert हो रहा है. It's a transition phase. Like in your chemistry, you have the modern periodic table. So on one side of the modern periodic table, you have the metals. On the left hand side, you have the metals. And on the right hand side, you have the non-metals. And between the metals and the non-metals is a transition elements ka group. Those elements which denote or which exhibit or which show कुछ तो मेटल की प्रॉपर्टीज भी दिखती है, कुछ थोड़ी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी दिखती है, और धीरे धीरे एज यू गो अक्रॉस द टेबल मेटल प्रॉपर्टीज स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड पूरी नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज बनती है. ये सेम चीज ग्राफ में भी हो रही है. एट पॉइंट ए देयर वाज आइस, between point A and B there is both ice and water, but by the time you reach point B it has changed completely into water. So point A is ice, point B is water, and segment AB is that transition. वो जो change हो रहा है वो दोनों है. Segment AB is ice plus water. Now once water पूरा convert हो गया और अब मैं हीट सप्लाई करता रहूं, आई कंटिन्यू सप्लाइंग द हीट, अब टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग बिकॉज दैट हीट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनीथिंग. इट इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट वाटर. वंस अगेन इट्स लाइक दैट सेम बैंक बैलेंस. मैंने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया और फिर विड्रॉ नहीं किया, तो फिर मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. वो पैसा मेरे अकाउंट में स्टोर्ड है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है. Once the temperature reaches 100 degrees, now you all are aware 100 degrees is a special temperature. It is the boiling point temperature of water. Once the water starts boiling, in boiling what happens? Again change of state takes place. Boiling में water convert होता है steam में. तो point C represents water at 100 degrees, D represents steam at 100 degrees. अगेन CD हॉरिजॉन्टल है, वो सेगमेंट हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल सेक्शन मतलब वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है. AB इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, CD इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल. वो दोनों सेक्शन में, AB वाले सेक्शन में एंड CD वाले सेक्शन में टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, बट चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. A to B, solid is converting into liquid. C to D, liquid is converting into gas. तो वो जो सेक्शन है AB और CD,
वहां की हीट हिडन है. When I say hidden, it means नीचे से तो हीट सप्लाई हो रही थी, ऊपर थर्मामीटर में डिटेक्ट नहीं हो रही है. क्यों डिटेक्ट नहीं हो रही है? Because between A and B and between C and D, the heat is being utilized. It is being utilized to break the molecular bonds. Only when the molecular bonds will break, a substance will convert from solid state to liquid state or from liquid state to gaseous state. तो वो heat use हो जाती है. So then that is the definition. You can read the definition afterwards. It is called as the latent heat of fusion. From A to B, it is called as the latent heat of fusion. And between C to D, that is again latent heat. It is at a constant temperature. This is called as latent heat of vaporization. So this is something which you should remember. Latent heat के बारे में बहुत questions आए हैं, और latent heat के बारे में sometimes they have given the graph. And after giving the graph, they have asked questions on it. So you must have seen a graph like this. ये Z के shape का है. It is looking like the shape of Z. Then these are the questions which are there. Which part of the graph, see, is a question number 1. It's a 1-mark question, let's say. Which part of the graph shows a change from ice to water at a constant temperature? So all of us have understood it is that segment AB. Segment AB shows the change of ice to water at a constant temperature. So when you see a question like this, in your mind first you should think ये कौन से chapter से पूछ रहे हैं? Then your mind should tell you कि ये gravitation का तो question नहीं है, ये effects of electric current का question तो नहीं है, this is not a question of refraction. Then you will say हाँ ये तो heat का question है, this is there in heat. अच्छा, अब हीट तक तो पहुंच गए. अब हीट में भी बहुत सारे डिस्कशंस है. रेजुलेशन की बातें हैं, लेटेंट हीट की बातें हैं, अनोमलस बिहेवियर की बातें हैं, ड्यू पॉइंट का डिस्कशन है. सो मेनी डिस्कशंस आर देयर. देन you should narrow it down कि पूरे हीट के चैप्टर में ये ग्राफ ये लेटेंट हीट में देखा था हम लोग ने. So from there you should come down from the chapter of heat, you should come down to the specific topic of latent heat. So remember, part AB shows ice to water. Correct. Which part of the graph shows a change in temperature without change in state? अब temperature change हो रहा है, लेकिन state change नहीं हो रहा है. So obviously part BC. What does point B represent? 0 degrees water. What does point C represent? 100 degrees water. तो B से C तक water ही है. Point B पर भी water है. Point C also shows water. But the temperature is changing from 0 degrees, 10, 20, 30, 50, 80, 100 बढ़ते जा रहा है. So this is change of temperature, but not change of state. Define latent heat of vaporization. That definition you should study and go. Now, what is the heat energy absorbed from A to B? What is it called? We just now said it is called as latent heat of fusion. Fusion is another word for melting. But exam you should write fusion only. And what is the heat energy absorbed from C to D called? Then it is also called as latent heat. दोनों latent heat है. But to distinguish and differentiate them, this is called as latent heat of vaporization. Remember, boiling is vaporization. Vaporization takes place in 2 ways. One is boiling, one is evaporation. So this is called as latent heat of vaporization. Vapors are formed. Okay. So this is the graph which you can expect in your exam. Okay. All right. Now, I'll just take a moment and we will move on to the next topic. Just I'll take a moment, please. Yeah. Another discussion which is there is the topic of regulation. And regulation is, if you remember from your textbook, it is that metal wire which is, you know, two very heavy weights are attached to the ends of that metal wire,
और फिर वो वेट्स को अटैच करके उसको आइस क्यूब के ऊपर, बड़े से आइस क्यूब के ऊपर हम लोग उसको प्लेस करते हैं. If you remember, there was a video for that we had seen. I'm not sure whether you remember that thing, but there was a video in which we saw कि दो heavy metal को एक wire की दो ends पे attach कर देते, one on each end, and when that wire is kept on that particular ice cube, ice slab, बड़ा ice का piece होता है, तो उसका weight से ice के ऊपर pressure develop होता है. And as the pressure increases on that ice slab, it begins to melt. Because pressures and melting point are inversely proportional. As the pressure increases, the ice के ऊपर melting point, the top layer का ice का melting point decreases. अच्छा, now as soon as it melts, वो पानी बन जाता है. So that metal wire slips inside. वो अंदर चले जाता है. As soon as it goes inside, वो top layer पे से pressure हट जाता है, because now it has gone to the second layer. Let's say, just for the sake of understanding, let's say there's a building of 7 floors और ऊपर terrace है 8th floor पे. तो metal wire को अगर हम लोग ने terrace पे रखा, वो पूरी building suppose एक ice cube है. The metal wire is on the terrace which is on the 8th floor. जैसा वो 8th floor के ऊपर pressure बढ़ेगा, उतना part melt हो जाएगा ice का, because as pressure increases, melting point decreases, the ice starts melting. As soon as the ice starts melting, वो metal wire 8th floor से 7th floor पे आ जाएगा. तो we have to accept कि अभी pressure 7th floor पे है, 8th floor पे से तो हट गया. As soon as it melts, it will slip down and that ice becomes water. As soon as the ice becomes water, वो wire जो है 8th floor से 7th floor पे आ जाएगा. अच्छा, now pressure will be on the 7th floor. लेकिन 8th floor से तो pressure हट गया ना. So on the 8th floor, pressure will decrease. And as soon as the pressure decreases on the 8th floor, what will happen? Melting point will increase. और वो 8th floor वाला level वो ice बन जाएगा. Because now the pressure is on the 7th floor. Now what will happen? On the 7th floor, pressure will increase, melting point will decrease, ice becomes water. तो वो वायर 7th फ्लोर से स्लिप होके पानी में से निकल के 6th फ्लोर पे आ जाएगा. As soon as it comes on the 6th floor, तो 7th floor पे pressure will decrease, melting point will increase and water becomes ice. मतलब 8th floor भी ice बन गया, 7th वाला भी ice बन गया. मतलब level by level वो wire नीचे आते जाएगा. And as it slips down, as it comes down, ऊपर वाला जो पोर्शन था वो रीफ्रीज हो जाएगा. टेम्परली वो मेल्ट हो जाएगा because of the pressure, and gradually the wire will keep coming down. 6th पे आएगा, फिर और प्रेशर नीचे आएगा, 5th पे पहुंचेगा, 4th पे पहुंचेगा. It will keep slipping down, but as it slips down, ऊपर के लेवल्स वाल से रीफ्रीज हो जाते हैं. So that is nothing but regulation. As you can see, we had seen a video of this also. So this is the phenomena of regulation. Okay. All right. Now there's an answer for this, but honestly speaking, I would suggest that you study the definition more thoroughly. But they can ask you giving this drawing that what does this diagram represent? Which phenomena does this diagram represent? Sometimes they ask you just the question कि कौन सा phenomena. The moment you look at it, बोले हाँ अरे ये तो regulation है. This speaks about regulation. So then once you have identified regulation, they can ask you define that phenomena. So once you have identified कि ये regulation की picture है, ये diagram से हम लोग ने regulation समझा था, तो फिर वो आपसे regulation का definition भी पूछ सकते हैं. Over here they have given you the explanation that what exactly is happening. So wire last में देखिए, the wire moves to the ice slab without breaking it. Okay, now coming to by far the most important discussion which is there in this chapter is the discussion, I'm sure you all are knowing, anomalous behavior of water. Now basically what happens is, normally हम लोग ने study किया है that liquids, what happens to liquids is that they expand on heating and they contract on cooling. तो अगर मैंने water को 30 डिग्री से 10 डिग्री को कूलिंग किया,
तो कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि लिक्विड्स कूलिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज मिल्क, वेदर इट इज ऑयल, दे ऑल फॉलो द सेम प्रिंसिपल। एंड इफ आई कीप दिस प्रोसेस ऑन, कूलिंग करता गया तो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, कि व्हेन यू से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देन रिमेंबर व्हेन यू से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इट मींस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। and if volume is decreasing, तो इस बात को याद रखना, you will remember, you will need it afterward, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाए तो साथ साथ एक दूसरा इफेक्ट होता है कि जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। रिमेंबर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So remember, whenever contraction takes place, volume will decrease and density will increase. So same way 10 डिग्री से 4 डिग्री पे पहुंचे तो सेम बात फिर से रिपीट होगी। क्या रिपीट होगा कि वॉल्यूम को क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। एंड इफ वॉल्यूम विल डिक्रीज तो फिर क्या होगा, अगेन आई रिपीट, डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाए तो फिर डेंसिटी को क्या होगा, डेंसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। दिस इज अ सिंपल थिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। ओके, नाउ दिस गोज ऑन टिल 4 डिग्रीज। वाटर भी सबके जैसा जैसा दूसरे लिक्विड्स बिहेव करते हैं, वाटर आल्सो शोज द सेम बिहेवियर, नथिंग स्ट्रेंज, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, nothing exceptional. But the moment the temperature goes below 4 degrees Celsius, cooling karte rahe hum log. Now one would expect a contraction will take place, but no, this time contraction doesn't take place. Suddenly water का behavior थोड़ा strange हो जाता है, थोड़ा different हो जाता है. Instead of cooling and contraction, it starts to expand. And if I continue going forward below 4 डिग्रीज, देखो टिल 4 डिग्रीज कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, वाटर सब दूसरे लिक्विड के जैसा ही चल रहा था, but below 4 degrees, as the temperature keeps falling, it is seen that water begins to expand. Now again, as soon as we say water is expanding, so now what will happen is, can I say volume is increasing? Everyone agrees कि expand हो रहा है ना, expand हो रहा है मतलब फैल रहा है. Something which is expanding is मतलब it is increasing. Like when you are eating chewing gum, when you are chewing gum and then you try to make a bubble out of it, तो जैसे आपने chewing gum को bubble बनाया तो फिर वो expand हो रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है. अच्छा, जैसे वॉल्यूम बढ़ती है तो फिजिक्स सेज के डेंसिटी एंड वॉल्यूम हमेशा इनवर्स होते हैं, तो एज सून एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी, द डेंसिटी डिक्रीजेस, कम होने लग जाती है. So this is something you keep in mind कि whenever expansion takes place, volume will increase and then of course density will decrease. So this happens till 0 degree. मतलब what we see कि कौन से रेंज में between 4 degrees and 0 degrees, this water is not behaving in its regular liquid style. अच्छा, रिवर्स करोगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है. इफ आई वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 1 डिग्री, देखो 0 डिग्रीज इज वाटर, एट 0 डिग्रीज आइस भी होता है, लेटेंट हीट में डिस्कस किया था, एंड 0 डिग्रीज पे वाटर भी होता है. तो अगर मुझे उसका टेम्परेचर राइज करना है, अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री से 10 डिग्री, आई वांट टू कीप राइजिंग, ऑब्वियसली आई हैव टू सप्लाई हीट, मुझे हीटिंग तो करना ही पड़ेगा. और नॉर्मल बिहेवियर हमसे कहता है लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, बट अगेन बिटवीन 0 एंड 4 डिग्री सेल्सियस वाटर अपना opposite behavior बताता है. Instead of expanding, it begins to contract. Of course, above 4 degrees and above
water is behaving normally. Pay attention. Above 4 degrees, water के behavior बाकी सारे liquids के जैसे ही होता है. So this exceptional behavior of water between 4 degrees and 0 degrees Celsius, this exceptional behavior is also called as the anomalous behavior of water. Now, this anomalous behavior of water is understood with the help of an apparatus, which you know it is called as the Hope's apparatus. In the Hope's apparatus, what we find is there is a cylinder, and that cylinder is surrounded by a metal tray, which is also called as a trough, और उसके अंदर ice or salt freezing mixture बनता है. And we also fill water in that. लेकिन tap water नहीं पड़ते. Tap water is considered to be at room temperature. ये पानी फ्रिज में से लेते हैं. तो फ्रिज का पानी थोड़ा ठंडा होता है. 10 degrees is considered to be cold. So we fill water in this, which is in the from the refrigerator. ठंडा पानी है थोड़ा. And why do we fill cold water? What is the purpose? So that our experiment goes little faster. क्योंकि हमको 0 degrees तक जाना है. Anomalous behavior को study करने के लिए 4 degrees cross करके नीचे जाना है. 4, 3, 2, 1, 0. Now if I start with tap water जो 30 degrees से start होगा, तो cooling will take a very long time. इसके लिए 10 degrees का पानी लेते हैं और 2 thermometers हम लोग इसमें insert करते हैं. Initial temperature दोनों thermometer का same है. The initial temperature of both the thermometers is the same. They have not given any name. I am writing the name. Let's say this is thermometer T1 and let's assume this is the second thermometer T2. Both of them, just for the sake of identifying them, thermometer T1 and T2, right? Okay. Now in this cylinder, we can assume there are 3 sections. Section 1 is the section above the tray. Section 1 is the section above the tray. Okay, so we can assume that section 1 is above the tray. Ye wala portion, this part, this much portion. Section 2 can be assumed the part which is surrounded, the cylinder which is surrounded by the tray. And section 3 can be assumed that the portion of the cylinder below the tray. So there are 3 parts of the cylinder. One part of the cylinder is above the tray. One part of the cylinder is surrounded by the tray in which ice cubes are there, freezing mixture is there. And one part of the cylinder is below the tray. 3 parts. Thermometer is in the first section and the third section. Second section में thermometer नहीं है. Second section में only ice cubes are there. Okay, now cooling will start. Now, which part में cooling will start? Will it start in the section A? The top section है ना, खाली ऐसा ही नाम दे देते. Let's assume that this is called as section E, top वाला part, and let's assume that this is called as section B, middle वाला part, central part, and let's assume this is called as section C, just for the sake of discussion. Huh? Okay. Now cooling will start. Will it start in section A, section B, or section C? Obviously, it will start in section B. क्यों? क्योंकि सब बर्फ तो उधर ही है ना. सिलेंडर जब ठंडा होना स्टार्ट होगा तो जो जहां पे बर्फ रखा है वही पोर्शन ठंडा होगा. सो नाउ ये पानी 10 डिग्रीज पे था, कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. लेट्स अज्यूम 10 डिग्री से 8 डिग्रीज पहुंचा. इनिशियली दोनों 10 डिग्रीज पे. वाटर इन सेक्शन बी विल स्टार्ट कूलिंग. जब वो कूलिंग होगा तो कंट्रैक्शन होगा. Contraction होगा तो मैंने अभी आपसे बताया था, whenever there is contraction, what will happen to the volume? Volume will contract होना मतलब shrink होना. तो volume will decrease, volume कम होने लगेगी. As soon as the volume decreases, तो density opposite हो जाएगा. Density will increase, and as soon as the density increases, जब भी कोई चीज की density ज्यादा होती है, वो heavy होता है. और जब कोई चीज पानी में हेवी हो जाती है वो सिंक होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थ्रो अ स्टोन इन वाटर, देन दैट स्टोन विल सिंक इन वाटर. Why will that stone sink in water? Because we say the density of that stone is very high. इसके लिए पत्थर पानी के अंदर चले जाए. But if you throw a piece of wood of the same size, तो वो wood float होने लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी इज लेस. सो बिकॉज द डेंसिटी इंक्रीजेस, वो 10 डिग्रीज का जो 8 डिग्रीज वाला पानी था, आई रिपीट, इज इन द सेंट्रल रीजन, वो नीचे आएगा. तो थर्मोमीटर T1
which was initially showing 10 degrees, now it will show 8 degrees. And like this, temperature will keep falling. From 8 degrees, let us assume temperature went to 6 degrees. 6 degrees हुआ तो वही पानी जो है कूलिंग हो रहा है, contraction will take place, density increase होगा, पानी नीचे आएगा. And this story will be repeated till 4 degrees. मतलब सेक्शन बी में जितना पानी ठंडा हो रहा है वो सारा पानी सेक्शन सी में आ रहा है. इट इज कमिंग इन द लोअर सेक्शन. तो थर्मोमीटर T1 4 डिग्री पे पहले पहुंचेगा. याद रखना, थर्मोमीटर T1, द वन विच इज बिलो, वो 4 डिग्री पे पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा. बट वंस 4 डिग्रीज क्रॉस हो जाए, द मोमेंट 4 डिग्रीज क्रॉस हो जाए, then what will happen? Anomalous behavior will start. अब कूलिंग करने पे वाटर एक्सपैंड होने लगेगा. Because anomalous behavior में वाटर अपना नॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो करता है. It starts expanding. As it starts expanding, what happens is density decreases. As soon as the density decreases, अब वो लाइट हो जाता है. जैसे वो लाइट हो जाता है तो पानी जो है ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. Now the temperature of thermometer T2 will drop very sharply. बहुत फास्ट गिरेगा क्योंकि 4 डिग्री का पानी ऊपर जा रहा है. देखो इनिशियली ये 10 डिग्री पे था, अब 4 डिग्री का पानी ऊपर जा रहा है, तो 10 डिग्री से वो इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, नहीं, वो एकदम इमीडिएटली 4 डिग्री पे पहुंचेगा. And once it reaches 4 degrees, ऐसा नहीं कि स्टॉप हो जाएगा. Now whatever cooling is taking place, 4 degrees से 3 degrees, सेक्शन सी में 3 डिग्री का पानी ए में जाएगा. 3 डिग्री से 2 डिग्री. आई रिपीट, सेक्शन बी जहां पे बर्फ की आइस की ट्रे है वहां पे कूलिंग पहले होगी, तो सेक्शन बी में 2 डिग्री पहले बनेगा. वो 2 डिग्री का पानी अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ वाटर, इट विल नॉट सिंक, इट विल फ्लोट. Because the moment the water starts expanding, its volume increases, density decreases. जब density कम होती है तो water पे कोई भी object float होता है. And like this, like this, like this, it will continue till 0 degrees. Once the temperature reaches 0 degrees, अब सब जानते हैं कि 0 degrees is the freezing point of water. Water जब 0 degrees पे पहुंचता है तो freeze हो जाता है. तो ये जो Hope's apparatus का जो पानी है जो सिलेंडर में, then what is it? The top layer of ice. You can see a thin layer of ice in the top, right on top. But below that thin layer of ice, there is only water. At least for some time, there will only be water. So this is a strange thing. एक ही सिलेंडर में पानी है. Beginning में दोनों 10 degrees पे थे, but now after some time, let's say after half an hour, example I'm saying, after half an hour, एक ही सिलेंडर के दो thermometers are showing separate temperature. What is the final temperature being shown by thermometer T1? T1 वाला क्या टेम्परेचर बता रहा है? It is showing a temperature of 4 degrees Celsius. And what is the thermometer, final thermometer being shown by the temperature being shown by the first thermometer? It is 0 degrees Celsius. So this Hope's apparatus clearly shows कि anomalous behavior of water कैसे होता है. So this is anomalous behavior of water. Okay. This Hope's apparatus which explains anomalous behavior of water is also represented by a graph. This graph is also very important. And you should know this is important कि ये जो 4 degrees है, in this 4 degrees वाला temperature, please remember this properly, ये जो 4 degrees है, इसके ऊपर there is something which is maximum and there is something which is minimum. Please remember this properly. At 4 degrees, what is maximum? This is important. At 4 degrees, what is maximum? What is minimum? We say at 4 degrees, volume is minimum. याद रखना, at 4 degrees, at 4 degrees, volume is minimum. And if at 4 degrees volume is minimum, then at 4 degrees only density is maximum. Please keep this in mind. This question comes very often in the exams. 4 degrees पे volume minimum होता है
एंड 4 डिग्रीज पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है. ओके, सो दिस इज, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ऑलराइट, दिस वाज anomalous behavior water. And anomalous behavior of water plays a major role, in fact a very very important role in the survival of aquatic life in cold countries. क्योंकि जो कोल्ड कंट्रीज है, जो नॉर्थ में है, यूरोप के एकदम नॉर्थ में, इवन इंडिया में भी ऐसी कोल्ड कंट्रीज है, वहां पे क्या होता है कि जब विंटर सेट इन होता है तो टेम्परेचर गोज इनटू द माइनस रेंज. माइनस रेंज पे वाटर टेम्परेचर जब जाता है तो लेक फ्रीज हो जाता है. हम लोग ने अगर कोई डिस्कवरी चैनल या बीबीसी अर्थ का चैनल या नेट जियो, जहां पे वाइल्ड लाइफ और नेचर के बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, यू मस्ट हैव सीन आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे पूरा ऊपर आइस ही आइस दिखता है, खड़ी आइस दिखता है बस. बट डज इट मीन कि पूरा लेक फ्रीज हुआ है? थैंक्स टू anomalous behavior of water, entire lake does not freeze, only the top surface freezes. And how does that happen? It happens because of anomalous behavior water. क्योंकि जब air starts becoming, temperature starts dropping of air, अगर temperature कम होने लगा, let's say winter का season धीरे धीरे आने लगा, air का temperature becomes 8 degrees. Now if the temperature of air becomes 8 degrees, हवा का temperature 8 degrees हो गया है, तो ये 8 डिग्रीज वाला टेम्परेचर सबसे पहले किसको जाके टच करेगा? ऑब्वियसली इट विल टच द वाटर का लेक. पूरे लेक को थोड़ी ना हवा टच करती है, पूरे लेक को हवा थोड़ी टच करती है. लेक की जो है टॉप लेयर होता है, उसी कोई कांटेक्ट में तो है एयर के साथ में. ओनली द टॉप लेयर ऑफ द लेक इज इन कांटेक्ट विद एयर. तो अगर एयर इज हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 8 डिग्रीज, विंटर आ गया है, अगर एयर का टेम्परेचर 8 डिग्री हो गया, तो 8 डिग्री एयर का टेम्परेचर अगर हो गया तो फिर वो टॉप लेयर पे पहले जाएगा. लेक का टॉप लेयर विल बिकम 8 डिग्रीज. अच्छा, एज सुन एज इट बिकम्स 8 डिग्रीज, कूलिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा. कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन यू नो द प्रोसेस, वॉल्यूम विल डिक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज. जब कोई चीज की डेंसिटी बढ़ जाती है, वो हैवी हो जाता है, वो पानी सिंक होता है. तो 8 डिग्रीज का पानी नीचे आ गया. आफ्टर अ फ्यू डेज ये टेम्परेचर और ड्रॉप होने लगा. आफ्टर अ फ्यू डेज टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. टेम्परेचर ड्रॉप हुआ मतलब क्या? मतलब अभी 8 डिग्रीज नहीं रहा, अब वो टेम्परेचर ड्रॉप होके लेट्स अज्यूम 6 डिग्रीज हो गया. विंटर धीरे धीरे आती है ना, एक ही दिन में विंटर थोड़ी आती. बीच में एक सीजन होता है ऑटम. ऑटम में धीरे धीरे टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग. सो आफ्टर 1 वीक, एग्जांपल आफ्टर 5 डेज, टेम्परेचर फॉल हुआ 6 डिग्रीज पे. नाउ एयर जैसे 6 डिग्रीज के टेम्परेचर पे आएगी, इफ द एयर कम्स टू अ टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्रीज, फिर से वो एयर लेक के टॉप मोस्ट लेयर को टच करेगी, कांटेक्ट में है, तो टॉप मोस्ट लेयर 6 डिग्रीज पे आएगा. फ्रॉम 8 to 6, अगेन सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड. कूलिंग होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, पानी टॉप लेयर का हैवी बन जाएगा, और जब वो हैवी बन जाएगा तो सिंक होगा. तो ये 6 डिग्रीज भी गया. 6 डिग्रीज क्या स्टोरी फिर से कंटिन्यू होगी. 4 डिग्रीज, 4 डिग्रीज पे सेम स्टोरी रिपीट होगी. ये पानी नीचे आ गया इन दिस मैनर. So now one thing everyone understood कि अब ये जो पानी इधर आ चुका है, उसका क्या टेम्परेचर है? उसका टेम्परेचर क्या है? इट इज 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे. आई बात समझ में? everyone understood? It is the temperature is how much? The temperature is how much it is? It is 4 degrees. Correct? 4 degrees Celsius. ओके. ना अच्छा, ये तो चलता रहा, पानी नीचे 4 डिग्रीज का आ गया. बट इफ द टेम्परेचर फॉल्स फर्दर 4 डिग्रीज से 3 डिग्रीज, या नाउ वी नो anomalous बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा. अब वाटर एक्सपैंड होने लगेगा. एज सुन एज द वाटर एक्सपैंड्स, वो लाइट हो जाएगा. क्यों एक्सपैंड? बिकॉज एज इट एक्सपैंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड इफ वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, डेंसिटी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. डेंसिटी कम होने लगेगी. व्हेन समथिंग का डेंसिटी बिकम्स लेस, इट इज लाइट, और लाइट चीज कभी सिंक नहीं होती है, फ्लोट होती है.
तो अब 3 डिग्रीज का टेम्परेचर ऊपर ही रहेगा, वो वाटर जो 3 डिग्रीज वाला है वो ऊपर ही रहेगा और नीचे 4 डिग्रीज का पानी ही रहेगा. Then as the temperature of the atmosphere starts falling 3 degrees, 2 degrees, 1 degree, 0 degree, anomalous behavior के वजह से, due to anomalous behavior, the water will remain on the surface only, and आप जानते हो 0 degrees is freezing point of water. So as soon as it freezes, तो लेक का टॉप लेयर जो है फ्रीज हो जाएगा. Pay attention. This is what we see in the videos, in the documentaries, कि पूरा लेक फ्रोजन दिखता है, लेकिन अब समझ में आ गया कि पूरा लेक थोड़ी ना फ्रीज होता है, वो सिर्फ टॉप लेयर फ्रीज होता है. Now remember, because ice is a bad conductor of heat, ये जो लेक के अंदर जितना टेम्परेचर है उसकी हीट ट्रैप्ड हो जाती है. The heat gets stuck inside. वो हीट बाहर एस्केप नहीं करती है, क्योंकि बाहर एस्केप करने के लिए उसको आइस से पास होना पड़ेगा. बट आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को जाने नहीं देगा. तो someone might wonder कि यहाँ पे हीट कैसे आ गई. प्लीज पे अटेंशन. 4 डिग्री का अगर पानी है, जो 4 डिग्री के पानी में भी हीट होती है, ऑफ कोर्स कम होती है, वी डोंट डिनाई, कम होती है. 4 डिग्री का पानी जो होता है उसके अंदर हीट होती है, लेकिन वो कम होती है. सो दिस होल लेक इज एट 4 डिग्रीज. और बाहर आउटसाइड लेट्स अज्यूम टेम्परेचर हैज बिकम -5 डिग्री सेल्सियस. एग्जाम्पल -5. So between 4 degrees and -5 degrees, which is higher temperature? At between 4 degrees and -5 degrees, which is a higher temperature? Everyone will agree कि 4 degrees जो है वो higher temperature है, मतलब 4 degrees पे more heat है और -5 degrees पे less heat है. कम temperature है वो, less heat is there. So if that happens, then heat should start transferring, because in this chapter only we have studied heat always travels from a higher level to a lower level. But because ice is a bad conductor, वो जब हीट यहां से एस्केप करने की ट्राई करेगी, जब वो हीट यहां से बाहर निकलने की ट्राई करेगी, तो ये आइस उसको ब्लॉक कर देगा, ये हीट यहां से बाहर नहीं जा पाएगी. So for the next 2, 3, 4 months जितने टाइप तक ये लेक फ्रोजन है, ये हीट यहाँ पे ब्लॉक होगी, ये हीट को बाहर जाने नहीं मिलेगा, it will be blocked. Okay, so this is a very interesting and a very important discussion. It is called as anomalous behavior of water. This give reason का very bright chance is there. Exam में they can ask you, explain the anomalous behavior of water. Even on Hope's apparatus, there have been questions where they have given the drawing of the Hope's apparatus, and then they have asked certain questions related to that. So this also you should study very, very properly. Okay. Achha, now I will just pause for a moment. Very small discussion is there, and then we will wind up this revision lecture. Just wait for a moment, please. Yeah, one other topic which is not very difficult, I would say, is specific heat capacity. Let's say we have these 3 spheres, iron, copper ball and lead ball. ये 3 spheres थे. ये experiment में नहीं discuss कर रहा हूँ. इसको हम लोग previously heat करते हैं, boiling water में डाल देते हैं, और ये heat होगा तो heat absorb होगा. फिर हम लोग एक wax का बड़ा सा piece लेते हैं, बहुत बड़ा piece of wax. हमने तो wax जब देखा है normally candles में देखा होगा, वो तो कम क्वांटिटी का वैक्स होता है. ये बहुत बड़ा पीस ऑफ वैक्स है, और तीनों मटेरियल्स को, तीनों मेटल स्फीयर्स को मैंने ये वैक्स के स्पीड पे बड़े से स्लैब पे डाल दिया, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव हीट वैक्स तो मेल्ट होगा. एंड एज सून एज द वैक्स स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो मेटल ऑब्जेक्ट सिंक होगा, इट विल गो इनसाइड. एंड व्हेन इट गोज इनसाइड, then obviously when we wait for some time, 3 spheres है, तीनों same extent तक नीचे नहीं गए. Among the 3 we find iron सबसे deep चले गया.
It has gone inside the maximum. It means उसने wax को ज़्यादा melt किया. It has melted more wax, because of which it went deeper inside. Compared to that, second rank पे you have copper, वो भी अंदर गया, but not to the same extent. मतलब उसमें इतनी heat नहीं थी that it could weld so much wax. And सबसे कम, of course, is that last one, that is the lead one. So then we understand that the heat absorbed by iron is maximum and the heat absorbed by lead is minimum. Now the question is, why did it happen like this? हमने तो तीनों को उसी कंटेनर में, उसी बीकर में रखा था. तीनों के लिए पानी की वो क्वांटिटी भी सेम थी, पानी का टेम्परेचर भी सेम था. Then why is there a difference in the amount of heat? It means that तीनों को, all three metal spheres were kept in that particular beaker which was boiling, had boiling water, yet their own capacity to absorb that heat is different. All were given equal opportunity. Everyone was given, all the three metal spheres were given equal chance. But still, at the end of 5 minutes or at the end of 10 minutes, जितना time हमने रखा था, तीनों की capacity to absorb heat is different. तीनों का temperature जो rise हुआ is different. That capacity is called as specific heat capacity. This specific heat capacity varies from material to material. Iron is having different, copper is having different, lead is having different. From this drawing, we can safely conclude that who is having the maximum specific heat capacity. Then this drawing tells us that iron is having the maximum capacity to absorb heat. That is the reason वो सबसे ज़्यादा deep चले गए. It has gone सबसे inside. And among the three, which is having the least capacity to absorb heat, we say it is obviously lead, because lead has not gone that much inside. Okay, so that is about specific heat capacity. Then moving on to the very last discussion is concerning the formation of dew. Because all of us know that a major portion of the earth consists of water, that is why our earth is also called as the blue planet. And because it is consisting of major portion of water, there is constant evaporation taking place because the sun is shining in different parts of the world 24/7. So because of this constant evaporation, water vapor is added into the atmosphere, which is also called as humidity. Now this is interesting and important. Here we are trying to understand one process which is called as dew formation. You have seen dew, which is a phenomena which is more apparent and more visible and more clearly seen during the winter season. Now, winter season is the one which we are in now, Jan, Feb, December, Jan, Feb. It's called as the winter season. Acha, in the winter season also, throughout the day, you don't see dew. It is specially seen in the very early hours of the morning. Somewhere around, example, I'm saying 5 o'clock in the morning, 6 o'clock, 7 o'clock, early hours may you find dew formation. Then, what is this dew formation? Why is it only in winter? And secondly, why in winter also it is early morning? That's something we'll need to understand. That's what we're trying to discuss over here. You see, first and foremost, let's have a look about, first understand two words, very important: saturated and unsaturated. In saturated and unsaturated, normally we use this word in solutions. You know, when you put a spoon of salt in a glass of water और थोड़ा stir करोगे तो वो नमक dissolve हो जाएगा. Because all of us know that water will dissolve the salt. So one spoon you put, you stir it, it will dissolve. Second spoon you put and stir it, maybe a little longer time, second spoon will also dissolve. Namak dissolve ho jayega, salt will dissolve. Third spoon of salt I put in that same glass of water and I stir it properly. Maybe little more extra stirring kiya, वो भी शायद dissolve हो जाए. Example, we assume it will dissolve. But if in that same glass I put a fourth spoon और अगर मैं 10 मिनट तक भी stir करता रहा, वो नमक, वो salt नीचे जाके settle हो जाएगा, dissolve नहीं होगा. This is something which happens when we drink any when we drink Tang.
You know, when we take tang in a glass and you put that 2 spoon, 3 spoon of tang उसमें डाल दिया और उसको अच्छे से स्टर किया, तो हम लोग वो जब पी लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नीचे कुछ टैंग का पाउडर डिसॉल्व नहीं हुआ, इट रिमेन्ड बैक. Then what has happened is, why that full tank which we put for drinking that juice, for that drink, why everything did not dissolve, is because we say that was saturated. There is a limit, there is a capacity. वाटर के अंदर जब पहला स्पून ऑफ सॉल्ट डालोगे तो वाटर में कैपेसिटी है वो सारे सॉल्ट पार्टिकल्स को अपने में अब्सॉर्ब करने. सेकेंड स्पून डाला, मे बी इट विल स्टिल एक्सेप्ट, इट विल अब्सॉर्ब इट विल डिसॉल्व इट. थर्ड स्पून डाला, मे बी इट हैज सम कैपेसिटी, इट विल डिसॉल्व. बट व्हेन यू पुट फोर्थ स्पून, then there is a point जब air that water becomes saturated. तो इन द सेम वे अब वो सैचुरेट हो जाता है. अब तुम कितना भी उसमें नमक डालो, कितना भी टैंक डालो, वो डिसॉल्व नहीं करेगा. It's like how we also, while we are studying for very long hours, it happens with us also. हमारा माइंड भी ऐसा ही है. जब लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर होता है स्कूल में, फर्स्ट पीरियड होता है, हम लोग फ्रेश होते हैं, हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जो टीचर बताती है अब्सॉर्ब करते हैं. बट एज द डे प्रोग्रेसेस and by the time it is the last lecture, sometimes it happens in our classes also, that by the time we have the third or the fourth lecture, our mind also becomes saturated. बहुत हम लोग के दिमाग में वो भर जाता है. Then we are not able to absorb what the teacher is saying. That's when we say bore हो रहा है. So this is now what you see, the yellow colored particles are the air molecules, the blue colored particles are the water vapor molecules. ये कहां से आया water vapor? ये suddenly बीच में कहां से enter हो रहा है? Remember, ये evaporation से हो रहा है. That is the box, the gray color rectangular box represents the atmosphere. उतना छोटा सा portion. So this water vapor keeps entering. Is this air now saturated or is it unsaturated? मतलब क्या इसमें कुछ जगह बाकी है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए या पूरा पैक्ड हो गया है? द ड्राइंग से देख के पता चला अभी ये अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें थोड़ी जगह है. लेट्स अज्यूम एवेपोरेशन कंटिन्यू हुआ, अब ये 60% सैचुरेटेड है, 60% भर चुकी है, मतलब 40% अनसैचुरेटेड है, मतलब 40% जगह अभी भी अवेलेबल है. एवेपोरेशन कंटिन्यूज और वाटर एंटर होने लगा तो ये 80% सैचुरेटेड. ऑन इवेपोरेशन कंटिन्यूज और वाटर मॉलिक्यूल्स आने लगे, अब 100% सैचुरेशन, पूरा पैक्ड हो गया है. अब इसके आगे इफ यू विल कंटिन्यू, द एयर डज नॉट हैव द स्कोप, उसके पास जगह नहीं है. अब अगर इवेपोरेशन चलता रहा तो जब नया वाटर वेपर ऐड होता रहा तो फिर कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग वाटर वेपर को कंडेंस होना पड़ेगा. कंडेंसेशन में वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर और ये जो वाटर बनता है इट इज कॉल्ड एज ड्यू. 100% सैचुरेशन तक नहीं होगा. जब एयर ओवर सैचुरेट होने लगेगी तब जाके ड्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. So this is the basic idea in the process of dew formation. When the atmosphere cannot handle the amount of water vapor, वो saturate हो चुका है, उसके पास जगह नहीं है और evaporation को हम लोग stop भी नहीं कर सकते. हम लोग सन को थोड़ी ना बोल सकते अरे बाबा प्लीज स्टॉप इवेपोरेशन प्रोसेस, अभी जगह नहीं एटमॉस्फेयर में. अगर फिल्म देखने जाए, टिकट लेने गए, मूवी का हॉल भर गया तो टिकट वाले लेकर बाहर लगा देते हाउसफुल. दे विल रिफ्यूज, दे विल टेल यू प्लीज गो, अभी जगह नहीं है, भर गया, देन यू हैव टू गो बैक. पर एटमॉस्फेयर थोड़ी ना हाउसफुल का लेबल लगा सकता है. एटमॉस्फेयर के नॉट से हाउसफुल, अभी पैक्ड हो गया है, वाटर वेपर के लिए जगह नहीं है, प्लीज इवेपोरेशन को स्टॉप कर दिया जाए. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है. सो दिस इवेपोरेशन is an ongoing process and that is the reason when the air becomes oversaturated तो फिर वो ड्यू फॉर्म करती है. अब ये जो एयर की कैपेसिटी है, कितना वाटर वेपर हैंडल कर सकती है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट इज directly proportional to temperature. मतलब as the temperature decreases, the capacity also becomes less.
At 40 degrees, maybe air can handle all these water molecules. It is 70% saturated. Temperature agar shrink hua, the capacity shrink ho. You can see the rectangle has become slightly smaller. मतलब capacity shrink हो रही है. Saturation बढ़ रहा है. अब अगर 20 degrees हुआ, कैपेसिटी और श्रिंक हो रही है, सैचुरेशन इज इंक्रीजिंग, 90% सैचुरेशन हो गया है. रात में 10 degrees हुआ, एग्जांपल, सैचुरेशन और बढ़ गया, 100% सैचुरेशन हो गया. नाउ देयर इज नो स्कोप. तो इफ द टेम्परेचर फॉल स्टिल फर्दर, अगर वो और कम होगा तो फिर द ड्यू फॉर्मेशन विल स्टार्ट. Till 10 degrees, dew formation will not start. Below 10 degrees, it will start. This process is called, this temperature is called as dew point. If the temperature falls to 9 degrees, अब इतना shrink हो जाएगा कि थोड़ा water vapor condense करना ही पड़ेगा. Okay? So this was the discussion about humidity and dew point. And then of course there is relative humidity. It's a formula actually. Just remember, relative humidity is the mass of the water vapor present in air divided by the mass of water vapor required to saturate into 100. Then these numbers, please pay attention properly. If the relative humidity is greater than 60%, air will be humid. If the relative humidity is equal to or less than 60%, it will be air is dry. And if the relative humidity is 100%, pay attention, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. If the relative humidity is 100%, then we say the air is saturated. Okay, so this was the important discussions over here in this particular topic of chapter of heat. So I stop the discussion. Thank you everybody, and I hope this revision lecture benefits you, and from here I'm sure some of your doubts must have been cleared. Thank you all of you. Take care. Bye bye everybody.